Hello everyone, welcome back to our channel. Today we have a special treat for you as we dwell into the mystical world of tarot for personal growth and self-discovery. So whether you are a seasoned tarot enthusiast or you're just a curious newcomer, this reading will be definitely for you. So let's begin. We're going to do a pick a pile reading, and I'm going to make like 4 different piles, and you can choose according to the pile that draws you. If you want to see how I make the piles, you can stay connected in this part of the video, or you can directly go to the timestamp I've given below, wherein you can just choose the pile accordingly. So today is a very precious day. It is Janmashtami, and this is going to be a special reading for Janmashtami. I'm going to be using a lot of different tarot decks and oracle decks to give you a profound message that is meant to find you. So these are the 4 piles. This is pile number 1, Clear Quartz. Pile number 2, Hematite. Pile number 3, Aquamarine. Pile number 4, Malachite. These are the 4 piles. Make your choice. You can meditate on the card. Like make the piles. Select the card flew out. This is pile number 1. I will draw 4 cards for pile number 1. 1, 2. I let the cards just flew out. So if you want to see how I make the piles, you can stay, or you can actually go to the timestamp I'm providing below. And if required, we'll also take 1 card. Pile number 1. I've taken actually 6 cards for pile number 1. Pile number 2. 4. 5, 6. 6 for this one. 1. Okay, so let's start the reading for everybody who has chosen the pile number 1 with the Clear Quartz crystal. Let's see what messages are meant to find you. Till then, we will just keep all the other cards separately there. I have, as you've seen, I have taken the tarot cards, and I have also taken the oracle cards. Oh wow, that's great. This is wonderful. I see a lot of, my god, so clear. This your situation is really very clear. Okay, so let me just quickly tell you what I see from the tarot for you is you are I think of the question that you're thinking in your mind in terms of your work life. First of all, the messages that I see a lot of hard work that has been done, and I see that you had been like really putting in a lot of focus and a lot of work on something, and that's why if there are women out here, people who are women who are watching it, I see you will be sitting in a position of a lot of like a boss, having a lot of money and being very financially stable. Probably in your subconscious mind, you have been thinking a lot about your finances, and you have been wondering a lot about your finances, and that's why I see a lot of new beginning coming for your finances. And the majority of the reading that I see is related to your money situation, something related to your finances. And I also see when I tap into your conscious mind, it is for those people who will resonate with the messages. If you're not resonating with the message, then you can go to a different pile. Let me just guess what can be the zodiacs. It can be a fire sign or an earth sign, and also a little bit of air is also there. So Leos and Aries, Sagittarius, and Taurians, and also Libra. So yeah, if you're not one of those sun signs, that's also fine, but this is like the main message that I see. Lot to do with money and finances. So there has been a lot of thought process that has been going on for your money and finances. In the work life, I see very new opportunities coming up, so you are asked to be strong and keep your power and take your power back. If you are losing your power, if you're going into a zone where you're feeling kind of like tired because you've been working a lot relentlessly, but you're definitely going to be getting the rewards for all the work that you put in, so be very happy about that. And for your love life, I see you need to forgive somebody. There is a situation related to
some bit of forgiving and learning is required. Maybe in the past there has been something where in the past, you, as you release and heal the past, your experiences of love in the present moment will be much better. So you are asked to heal the past. So whatever has happened in the past, just let it go, let it heal. That's the message for you. And maybe your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So maybe your religious factors, what you've learned over a period of time, that has an influence on your love life. Okay, so make sure that you forgive. So you're a chosen person. Oh wow, amazing, awesome. You have so much potential. Your potential is endless. You are meant to be the queen that you are. For the women who are watching this, you are meant to be the queen that you are, and your potential is endless. So if somebody has ever told you that, you know, you can't do this and you can't do that and you should not go for this is basically because they know that you can do so much, that there has been some restrictions probably put on you so that you don't get into everything. But whatever you will go for, you are going to be like, you, the throne is yours. See, the throne card came for you. That is so cool. This is for women out here, and if there are men also watching it, then the same thing prevails for you as well. You need to have the strength. You are meant to thrive, and you are meant to be sitting with all the power of the king, with a lot of clarity in your mind. You'll have so much clarity in your conscious mind. Subconsciously, what you've been manifesting, you've been working for it, I see. So that is definitely coming for you. And second card is, I see you need to really make yourself the priority right now. You have been prioritizing everything else, everybody else, work, life, balance, and a lot of things. So right now it's crucial for you that you make yourself a priority. Treat yourself like the priority that you are. You have to do that. And the third message for you is, you don't need the wings to fly. You never needed the wings to fly. So don't trap yourself into any kind of thought process that you are stuck in any way. You are so powerful, that you are having so much power and potential to actually create. I will also read those messages for you. Oh wow, this entire message is coming down to the base chakra. So you are asked to be working on your root chakra. And as I told you, maybe you are thinking about stability and finances. And again, this card also shows me the same thing, that this is to do with stability. I think you've been like looking for having a stable heart, you know, a stable zone, a stable life basically. So something to related with your money is a considered factor, your foundation. So that I see, it's definitely coming for you. And also there has been something that has caused you some emotional loss, something that has caused you some pain, right? And which is why you are asked to heal your love life वाला situation. Like just forgive, and आपको मतलब बोला जा रहा है forgive करो, क्योंकि आपका जो सोल है वो बहुत पावरफुल सोल है. तो आपको forgive करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद को भी और लोगों को भी. आपके लिए नया बिगिनिंग आ रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट है that you embrace your life's purpose and you be the real you, who you really are. It's also very important, you are protected. Okay, so just be your real version, embrace your life's purpose. You can see this card, embrace your life's purpose. You can see this person, this girl sitting and doing her writing. So I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you're meant to be doing. So whatever is making your heart joyful, you should go for it, and do not stop yourself. If there is something that you've been waiting to take a step, so I would like to tell you, this is not the right time for you to take the step on that. You should wait and have a little patience at this point of time. As the strength card also shows me that you have to be strong right now, and you're protected. And the last message is silent. So a lot of times, see, this is such a beautiful card from this Bhagavad Gita deck. Now for all the messages from the Bhagavad Gita deck, I would like to read it as it is from the deck, because I don't like to interpret Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is already very clear. Of secret things I'm silence. Among the confidential activities of hearing, thinking, meditating, silence is most important, because by silence one can make progress very quickly. So as I see, you have been working on a project or something in your life, so you have to be quietly working in it. And the more quieter you are while you're working,
and not really talk to anybody about anything. You will be more in alignment with your self realization. Unless one becomes completely silent, one cannot think completely about the pastimes and activities of the Lord. Silence does not mean that one should not speak at all, but one should not speak of nonsense. So this is very crucial for you, that you be very on point. And while you're working, especially at that time, um, you don't tell everybody about what you're on to, what work are you doing, because the more you will be talking about things, more distracted you will get. So this is a important message for you. Also, I have placed you in my personal sphere of sapphire blue light to keep you safe. My sword and shield are also defending you against any unwanted energies. I'm protecting you now from physical, emotional, mental, and spiritual harm. This security is meant to give you the confidence necessary to progress on the path you are inspired to walk. When you are in place of fear regarding your physical, emotional, or spiritual safety, think of me and say, "Dear Archangel Michael, please be with me here now, that so that I can say feel safe and act from a place of courage." You can say this aloud or quietly in your mind. The way in which you reach out doesn't matter. Only thing that does is you do. Okay, so picture me walking alongside you throughout the day, because I am. So this is a message from Archangel Michael, and it is so beautiful that Archangel Michael is saying that you need to call him for protection, and he will protect you from every harm that could come your way. And I see you're working on a very important project or mission, and you're in a very serious time in your life where you're very focused, and you are asked also that don't just go for anything less than what your heart's desire is, because you have asked to be the real version of you too. So be the real you. The range of variation within human existence is a rainbow like none another. It would simply make no sense for me to present myself in a form that only some people can understand. And so, just like the rainbow of human expression, there is an array of Archangel Michael forms. It is wonder and a joy for me to shift to form that matches that your heart can embrace. When we in Archangel realm look at Earth, we are astounded in the awe of how beautiful the spectrum of humanity is. When we look at you, we see not just the incarnation you are in now, but also the incarnations that has preceded this. Okay, so we see all the people you have been in the past, we see the magical expressions of your uniqueness in the now, and we see all the amazing people your continued life here on earth would allow you to become. This is such a beautiful, wonderful message. Every person on earth is different from each other. Each of you has chosen to incarnate because you had something to offer that no one else can or possibly could. Stop judging yourself and instead see yourself through the eyes of someone who loves you dearly. Each and every one of you is needed in this moment, here and now, showing up as just exactly who you are. Don't let anyone or anything hold you back. Live your truth unapologetically. Be the real you and be the person right now. Okay, so this was the message for you. I hope you understood all the things that I said. You are in a wonderful, wonderful path at this point of time, and just be on the track. And one message that I would like to read for you, as you never needed the wings to fly, has also come for you. And it says, it seems like you are stuck in a never-ending cycle of self-doubt and self-criticism. When you tell yourself you can't do whatever you set your mind to, that's what we refer to as negative self-talk. It is extremely toxic. Just as we expect others to treat us with kindness, we also need to treat ourselves with kindness. A bird can't fly away if you don't let it out of the cage. So do not cage yourself, okay? Do not be like, no matter what, I want to be stuck in this situation. And don't doubt yourself. Every time you self-doubt yourself, that is like being extremely harsh and negative, and that's extremely toxic if you are having self-criticism or self-doubt. So don't do that. And whatever you are currently grappling with, you must put yourself first. When you are on an airplane, they always tell you to put your own oxygen mask before you try to help others, right? So this is to say, if you don't make sure your energy bar is full, then you will have no energy to give someone else. Be brave enough to admit when you need to take a step back from the demands of others and work on making sure that you are okay. Alright, so these are the messages for you. I hope you have resonated with this, and there is a new beginning coming for you for sure with this card. This is a guaranteed thing. I can predict this for your future. There is a new beginning for sure, and you have to forgive if there was an emotional loss. And thank you. Let's move to the next pile.
Oh, before I move to the next file, if you have not subscribed to my channel yet, then please do hit the like button and do hit the subscribe button. It will be really very kind of you to show me the appreciation if this message was helpful for you, and I will make sure that I make these I be the medium that I'm chosen to be, and send you all the messages that are meant to find you, because I channel messages from angels and from God, and that is the part of my life purpose, to help you to live your life's purpose, right? So hit the like button if this message resonated with you, and if it has helped you in some way. And if you're not subscribed, subscribe to my channel. I almost share a video like almost every other day, so stay tuned. And next, moving to the next pile now. Hi guys, to all the people who have chosen the pile number 2, let's find out what messages are there for you. I see you have been in a hermit mode, and I see there is a lot of wish fulfillment that is coming in for you. You have really tapped into your spiritual space. Oh my god, there are 2 cards extra for you actually. So you have really stepped into your spiritual space. I see you have been through a lot of conflict like situation as well, and there has been something where you had to stand your ground. I see there has been a situation where there were like a lot of people, a lot of fights, something had been going on where there was a lot of conflict, and you really used your powers of connecting with divine. And okay, all right, I see this. In your love life, I feel there was someone who was wearing a false self-made mask in this relationship, and there is something that has to do with a very magnetic, strong attraction. So I get the Lovers card also here. So maybe this reading also dwells with your soulmate, or maybe yeah, with your soulmate, and you are wondering. This is moreover, I see it towards the love life. And if you're thinking about your work life, then let me tell you that in your work life you will be sailing out of the current conflict situation. If there has been some conflicts or some kind of struggle or fight that has happened in your workplace with a lot of people competing for something, then you will be sailing out of that, and you will be moving into much calmer water where you are going to be much more secure and comfortable. And when it comes to your love life, so you are going to be happy, okay? You will be happy because the sun card has also come for you. You can see the sun is here. So whenever the sun is here, the future I see is really bright for you. Consciously I see there's a lot of wish fulfillment with the 9 of cups, okay? And there is like something that you had been waiting for. So basically there has been a situation wherein you had to go inwards. There was a situation when you had to like stop your outside contact to a large extent, and you went inwards. And there was a time you sometimes even might have asked, am I like antisocial, what is the matter? Because even if there were people, you thought that it's more आपके लिए ज़्यादा important खुद के साथ कनेक्ट करना था, आप ज़्यादातर खुद के साथ कनेक्टेड थे. तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि आपको ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है हर दिन कि मैंने क्या सीखा, मैंने अभी इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है इन सब से मैंने क्या सीखा. अगर लड़ाइयाँ हैं, अगर कुछ डिसेप्शंस हैं, अगर कुछ चीज़ें हुई है तो उसमें से मैंने क्या सीखा. एक तो देखिए आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेफिनेटली है, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि इधर भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है, और फिर ठीक कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड के बाद ही आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आफ्टर 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो दिस मीन्स बेसिकली आपका जो मतलब जो भी स्टैंड किया आपने अपने ग्राउंड में, आपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ किया, आपने अपने स्पिरिचुअल रेजर्वोयर को यूज़ किया, आपने काफ़ी अपना स्ट्रेंथ यूज़ किया है, और हर स्टॉर्म का एक अंत होता है. तो ये आपके लिए आ रहा है कि दिस स्टॉर्म विल ऑल्सो विल कम टू एन एंड. आपको कहाँ जा रहा है, आपके लिए मास्टर नंबर 33, 44, आप शायद एंजल नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, राइट? और मेमोरीज ऑफ लव है आपके दिल में, काफ़ी ज़्यादा प्यार रिलेटेड सिचुएशन. एज आई सेड कि ये आपका सोलमेट से रिलेटेड कुछ हो सकता है. कुछ हुआ था जिसमें हार्ट अटैक और लॉस का रिलेटेड कुछ था, है ना? देयर वाज समथिंग टू डू विद हार्ट अटैक एंड लॉस. तो मैं क्लियरली इधर देख सकती हूँ कि पहले अगर बात करें आपके लव लाइफ का, तो आप समझे इस बात को कि आप दोनों का जो है ना, इट्स मेंट टू बी. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री इन दिस सिचुएशन. देयर इज़ समबडी विद whom you have a very strong connection. So but you have to get your power back. You have to be very clear about what is something that you will accept and what is something that you will not accept. ठीक है?
सो यू हैव टू गेट योर पावर बैक। ये क्लियरली आपके पास, मेरे पास दो बार आ रहा है। और अभी मैं आपको ये बता दूँ दैट देयर इज़ आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू, आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू। सो एनी even though you can't see it, I'm actively working on the situation. I'm here and helping you. So Archangel Michael has been continuously helping you out. And there's a message from Bhagavad Gita also, that is to be tolerant. Okay, and you have to be honest with yourself. Okay, so let me just see this. First of all, focus on the here and now. You have to focus in this particular moment. And as a phoenix, you've always risen. I see 369 also. 369. So this is angel number 369. You are continuously guided by angels for sure. And I see that the situation is moving. It's changing. जो भी situation आपके लाइफ में जिन लोगों ने जैसे हुआ है, जो भी situation हुआ है, आप उससे बाहर definitely आ रहे हो। और मैं आपको बताती हूँ कुछ messages. No matter how hopeless you may be feeling at this moment, know this: you can and will survive whatever trials you've been put through. From the ashes of the past, you shall create a storybook. Endings filled with beauty and resilience. All future flames will cower when they hear the whisperings of your name. So आपने इतना सब कुछ survive किया है. Future में आप खुद को लेके सिर्फ आप ही नहीं, लोग भी आपके अराउंड के सब बोलेंगे like don't mess with this person. So if you're a woman, definitely I see that you've been asked to focus on the here and now. Focus अभी जहाँ पे आप हो, इसी मोमेंट पे रहे, पास्ट में बार बार ना जाए, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको हार्ट अटैक हुई है, जिसमें आपको कुछ लॉस रिलेटेड, हार्ट अटैक रिलेटेड, कुछ पेन रिलेटेड है, और आपने काफ़ी ज़्यादा अपना पावर भी यूज़ किया है. इफ़ यूर अ मैन ऑल्सो, द सिचुएशन आस्क्स यू टू regain your focus. As a woman or man, this is for collective. Regain your focus. Do not get distracted from your goals. Do not get distracted by trivial matters, right? Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. So you have to stay grounded. And I will also read a message for you. Memories of love. The situation is improving. This was not like the last pile. The last pile was much, much different from this. I see there might be Geminis here. Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo. A lot of different energies are actually present in this pile. You may find yourself walking down memory lane at this time. देखा, नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप बार बार करके पास्ट में ना जाए, ऐसे मैंने आपको बोला, राइट? This nostalgic card could indicate that an old friend or acquaintance from the past may step back into your life, or it could be even resurrect loving images from the days gone by. Does this person, these happy forgotten moments or those innocent childhood memories encourage you to recall and welcome the energy of love? Is there a message or lesson from these fond recollections that could benefit you in your present life? The number 6 card relates to support, dedication, unity, and a need for balance in the areas of emotions and love. Your heart and soul are asking you to not dwell in the past, okay? But use the inspiration and enjoy from the time to assist you here and now. See, this is a recurring message. इसमें भी आ रहा है focus in the present, be in the now. और यहाँ से भी आ रहा है कि डोंट बी इन द पास्ट. पास्ट में से आप उन्हीं मेमोरीज को अपने पास रखें जो आपको एनकरेजमेंट और हैप्पीनेस दे रहा है टू मूव फॉरवर्ड, एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके? एंड फ्रॉम द भगवद गीता, द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू इज, before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of material senses and check the force of desire and anger, one is well situated and is happy in this world. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all the sins, achieve liberation in the Supreme. So, yeah, this is a very strong message for you, that हैप्पीनेस डज नॉट रिक्वायर यू टू बी विद एनीबडी. हैप्पीनेस के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए. हैप्पीनेस इज एन इमोशन विच इज कमिंग जनरेटिंग फ्रॉम अ थॉट, राइट? तो आप पूरा रिस्पॉन्सिबल हो अपने हैप्पीनेस के लिए, और आपको हैप्पी होने के लिए इसी मोमेंट में आपको हैप्पी होना होगा. इसी मोमेंट में यू कैन फील द एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस. देखो, सैडनेस के लिए किसी चीज़ का लॉस
कोई अटैचमेंट जब होता है किसी चीज़ से, तब सैडनेस का लॉस का बात आता है, या व्हेन यू आर अटैच टू समथिंग देन यू विल फील द सैडनेस और एंग्जाइटी और स्ट्रेस। बट आप हर चीज़ से जब डिटैच कर देते हो खुद को, तो आप अपने आप में खुश रह सकते हैं। आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करके यू कैन बी हैप्पी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। खुद से ऑनेस्ट होना, खुद के अंदर के इमोशंस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे फीलिंग्स है, डिफ़िकल्ट फीलिंग्स, जिसको एड्रेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, इफ़ यू समटाइम्स फील हर्ट, इट्स ओके टू क्राई, टू लेट फ्यू टीयर्स डाउन, सो दैट healing happens. And the idea should not be to get stuck in the past, it should be to move forward, and I see a lot of happiness definitely coming in for you. Okay, and your name will always be remembered for being this person who has survived it all and who has come out of it victorious. So congratulations on that. If you like my reading, then do subscribe to my channel and hit that like button. Do like it if I have helped you in some way, because I'm trying to give value and be honest to my spiritual life, and that's the job God gave me. And you should also say, if God protects me, who is going to attack me? Because when God protects you, who can protect you? Who can go against you when God is with you, right? Who will go against me when God is with me? So say that and be strong in your affirmations on the now. Like what is the kind of feelings you're generating right now? और ये जो केमिस्ट्री है आपका इनके साथ, ये बहुत अच्छा है, ये डिस्टाइंड है, और you are moving out of the situation. So just be very strong and honest. Okay, so let's move on to the next pile now. Hi, pile number 3. Let's start your reading, and first we will be taking out the tarot cards for you. Let's see. Think of a question that is something that you want to know, whether it's related to somebody you love, something related to your relationship, love life, or something related to your work life. Oh wow, I see in your work life you're going to be like having a lot of abundance that you've been like waiting for. There has been a situation which has made you really confused. There is something, maybe two things you had to make a decision between, maybe two people, two jobs, two decisions, something that had to make you were confused about something, and there were like two things you had to make a decision with. So you had a little non-clarity, probably because you were kind of feeling stuck in your mind. I see a very fast movement coming for you, and a lot of fiery energy, a lot of fast movement that is coming. You're going to be like having so much peace, after a lot of turmoil, a lot of tension, जो peace मिलता है ना, money wise also, yeah, that's what I see. Maybe somebody is helping you to get the money. So financial development is happening. Financially you are feeling very abundant and very happy, so congratulations on that. Emotional retreat का card भी आ रहा है. Let's clarify why is this card coming. We will just come to that in a moment. Yeah, you need to forgive somebody. All the people who have chosen pile number 3, there has been something that has made you kind of like it hurt you. आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली एक रिट्रीट टाइप का महसूस करा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने को मन करा, मतलब अंदर से आप बहुत सैड हुए हो किसी चीज़ को लेके. तो यू आर आस्क्ड टू फॉरगिव दोज सिचुएशंस एंड गिव अनदर चांस. टेक अ चांस ऑन देम, वट एवर द सिचुएशन इज, उन पर एक चांस और लीजिए. The more you will practice it, the more confident you will become. So the confidence is something that comes with practice, right? तो जो भी आपका काम है या लाइफ में रिलेशनशिप है, जो भी है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मतलब धीरे धीरे करके आएगा वो. तो इसमें आप खुद को मतलब ज़्यादा प्रेशराइज ना करें. यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर द एफर्ट्स, या प्रोबेबली दैट्स व्हाई यू गोइंग टू बी लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ मटेरियल गेन्स एज वेल. और वट एवर सिचुएशन यू बीन वर्किंग ऑन, जो भी सिचुएशन में आपने इतने टाइम से काम करा है, यू आर गोइंग टू गेट रिकग्निशंस फॉर इट. दिस इज द रिकग्निशन कार्ड. यू विल बी रिकग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड ऑन दैट. द ट्रूथ शैल बी आउट. जो भी सच है उसको हमेशा भगवान सपोर्ट करते हैं, तो सच्चाई की विक्ट्री हमेशा होती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ विक्ट्री कमिंग इन. सी, दिस इज विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड दिस इज़ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड. तो ये जो आपका मेन थीम मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका, ओ वाह, 369, सी 3 6 and this is 9. Okay, so this is because of the victory in your situation, because of the recognition that you will be receiving, materially you will be very happy. ठीक है, तो आपका जो रूट है, बेस चक्र है, दैट विल बी एकदम इन बैलेंस बिकॉज ऑफ द
मटीरियल रिकग्निशन, क्योंकि हम माइंड बॉडी स्पिरिट है, तो हमारा जो है, हम बस बॉडी नहीं है और हम बस स्पिरिट नहीं है, तो हमारा बैलेंस है, तो आपका मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा. तो फ्रॉम द आर्कएंजल माइकल आई कैन गेट अ मैसेज दैट लेट गो ऑफ एनी फियर that is worrying you. Okay, that if there is any fear that if your loved ones are safe or not, then let me tell you that your loved ones are definitely very very safe, so don't worry about that. Yes, you are asked to be a light to others. Be a light to others. Maybe you are a light worker, maybe you are a star seed, maybe you are also a star seed like me, from a like a light worker like me, who is meant to be on earth to spread love and to be spreading, you know, powerful messages that you have. Share that, shine your light on the world so that others can learn from you. Okay, don't stop yourself from sharing. Embrace this magical moment. So this is a beautiful magical moment, as these messages that are coming to you via me. I'm a medium. I'm a medium. I channel messages from higher realms, so I am just telling you what angels want to tell you. Oh my god, angels are healing. Angels of healing are with you. So if there has been a situation where you were feeling hurt, that I see, you are emotionally hurt, you had an emotional retreat, something had happened, that's why you've been asked to forgive. Whatever the situation is, people, person, things, just forgive them. And Archangel Raphael is healing you with the green emerald light. So you see, my nail paint is also green right now. Beautiful soul. I ask you to close your eyes and just meditate with green light. Just think like a lot of green light is entering into your system and is healing you. Also, you can spend time in nature. That will also help you in healing, right? And oh my God, you have chosen the malachite. This is green crystal. And with the green crystal, this is the green card also that is here. This is so much of synchronicity. It gives me goosebumps, right? When I get so many synchronicities while channeling. Release your ex. The time has come to clear your energy. So whatever pain somebody has caused you in the past, release them. Release it. Let it go. You have to let go of that energy. Free yourself. See? Free yourself. Everything is related. Release your ex. Free yourself. This emotional heartbreak. ठीक है, ये सब चीज़ें आ रहा है आपके लिए, और ये भी आ रहा है कि टेक अ चांस ऑन देम. जो भी है उसको फॉरगिव कीजिए, लेट इट गो. हो सकता है इफ़ यू वांट टू बी विद द सेम पर्सन और सेम कंपनी और सेम सिचुएशन, देन टेक अ चांस ऑन दैट, बट लेट द पास्ट का जो सिचुएशन है उसको रिलीज़ करके. और भगवत गीता से आपके लिए आ रहा है डिटर्मिनेशन. सच ए ब्यूटीफुल कार्ड जन्माष्टमी के लिए स्पेशली मैं आपको दिखा रही हूँ. तो दिस इज़ योर ओवरऑल मैसेज. लेट मी जस्ट रीड सम गाइडेंसेस फॉर यू. You have been holding a grudge against somebody in your life. Maybe it's a loved one, or maybe it's yourself. This isn't a card to tell you that you must you have to learn to practice to forgive. No, forgive them on your own terms. If and when you are ready to do so, this is simply a nudge for you to consider whether that time is in the present. Don't let forgiveness feel like an obligation, but like a shiny red hope that gets you through your sleepless nights. Okay, so this is a choice that you make. If you want to forgive or not, it's your call. It's not forced on you. आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको किसी को forgive करना ही है, अभी करना है. जब आप रेडी हो तब forgive करें, when you are ready. But आपको forgive करना पड़ेगा, but when you are ready. Okay, and then there is this message for you that 39. If anyone has a reason to keep their guard up, it's you, right? People have been known to mistreat you, and like any rational person, you finally got tired of it, went back inside, locked the door, but you were not supposed to stay out of the rain forever. So no matter how terrifying the prospect may seem, you need to put yourself out there again. Whosoever it is thinking of you, they can be trusted to walk with you through the storm. Whoever it is that you're thinking of, they can be trusted. तो जो भी पास्ट में. So dear pile tree, I see a lot of things that is happening in your reading, and that is you have an good idea कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. तो उसके हिसाब से गुड न्यूज़ इज कमिंग, इट्स ऑन द वे. द क्वालिटीज ऑफ दिस कार्ड आर completion, victory and success that often follow a difficult period. Many people around you are very proud to see how you have triumphantly come through it.
They respect you and may even attempt to follow you as an example. You worked hard and devoted much effort to get to this point in your life where you've become wiser and grown up in so many ways. Always remember to stop and pat yourself on the back. You deserve it. This card also reminds you to stay grounded. Remember where you came from and keep your ego in check. Don't lose who you really are. The victory card can be used as a teaching tool for the future. Realize that if you came through this challenging time, you can achieve anything. तो आपने ज़िंदगी में जो जहाँ से स्टार्ट करा था अपना जर्नी और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, बहुत लंबी जर्नी तक आए हो। आपके अराउंड सबको ये दिखाई दे रहा है कि आपने कितना कुछ अचीव करा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब अचीवमेंट का रास्ते में आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें टफ भी होता है लाइफ। तो आपने वो टफनेस चीज़ों को आप उसको क्रॉस करा है, आपने उसको ओवरकम करा है, इसलिए लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड भी है, आपको एक एग्जाम्पल की तरह भी देखते हैं। पर आप ये याद रखें कि आप जो हो वो मत लाना, ईगो मत लाना। हमेशा याद रखना कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। आपको ये याद रहेगा तो आपके अंदर ईगो नहीं आएगा, और ईगो ना आना ही हमारे लिए बेहतर है। ईगो नहीं आना चाहिए, चाहे आपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर लिया हो। नॉर्मल रहना, ग्राउंडेड रहना अच्छा रहता है, तो वो रखें। और इतना सब कुछ अगर आपने ओवरकम करा है तो ज़िंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपको मेरा जो ये प्रेडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है, आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली मुझको सपोर्ट करना, और वो आप एक लाइक हिट कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट में मिलता है। वैसे ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज अ लाइट वर्कर, इट्स माई वर्क टू शेयर दैट लाइट टू यू। और आपको भी ये बोला गया है विद दिस कार्ड कि आपके पास अगर कोई मैसेज है जो लोगों को हेल्प कर सकता है, देन डेफिनेटली उसको आप लोगों को हेल्प करें। मेरे गाइडेंसेस को पॉजिटिवली लें, आपके हार्ट को आप हील करें। आपने चूज़ भी ये ग्रीन क्रिस्टल करा था, तो इट्स रिलेटेड टू लॉट ऑफ हीलिंग जो आपके लिए आ रहा है। और जो भी पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में छोड़ दें। आपको मतलब यू कैन टेक अ चांस ऑन देम एंड रिलीज़ करें, रिलीज़ योर एक्स। और अपने आप में ही आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उस चीज़ को हम हमेशा याद रखें। बाकी भगवत गीता के जो टेक्स्ट में से आपके लिए क्या मैसेज है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। As a lamp in a windless place does not waver, so one whose mind is controlled remains always steady in meditation on the transcendent self. One should engage in the practice of yoga with determination and faith, not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses of all the sides of the mind. तो ये कहा जा रहा है आपको कि जिस माइंड में आप जब माइंड स्थिर रहता है तब आप तो गोल ओरिएंटेड रहते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो, सक्सेस पे सक्सेस आप बिल्ड करते जाएंगे। और योगा करें, योगा से आपका माइंड बॉडी जो स्पिरिट है वो बैलेंस में रहेगा। तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है एक इंसान के लाइफ में, राइट, ह्यूमन लाइफ हम एक्सपीरियंस करें तो वो हमारा मटीरियल सेल्फ है, शरीर हमारा मटीरियल सेल्फ है। और ये धरती में जो हमने एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, ये मटीरियल में भी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो उसका एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस में रहना इंपॉर्टेंट है, और मेडिटेशन में रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका मैसेज है, आप यू वांट टू शाइन। आप सबकॉन्शियसली भी शाइन करने का सोच रहे हैं, आप बहुत सारा नेम, फेम, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू। जो भी हार्ट ब्रेक, हार्ट लॉसेस था, ये होगा, ये इससे आप स्ट्रॉन्गर वर्जन बनते हैं। और हमेशा खुद को किसी भी टॉक्सिक स्पेस में से रिलीज़ करके अपने अंदर से कनेक्ट करके गॉड के साथ कनेक्ट करना आप, और आप बहुत ज़्यादा रिवॉर्डेड भी होंगे। ये आपके लिए आ रहा है, बहुत सारा गुड न्यूज़ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 4, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पाइल। दिस वाज ब्यूटीफुल स्पीकिंग टू यू। बाय। Hi, all the people who have chosen this Aquamarine bracelet, let's see what's coming up for you. This is a very beautiful, peaceful bracelet that you can see. You can purchase it from our store as well. Okay, let's move on to your reading. Let's see what does tarot have to say. Oh, there has been a lot of nostalgia. कुछ आपके पास से रिलेटेड कुछ कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा है या आ रहा है, या आप हो सकते हो कि अपने पास्ट में काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं।
आपकी लाइफ में गॉड का, स्पिरिचुअलिटी का बहुत एसेंशियल रोल रहा है। आप मतलब काफ़ी प्रोटेक्टेड है बाय गॉड एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। देयर इज समबडी हु इज़ कमिंग टू यू विद एन ऑफर, विद अ प्रपोजल एंड एक नया इमोशंस के साथ नया बिगनिंग आ रहा है टू ऑल द विमेन जो है जो सिंगल है यहाँ पे, उनके लिए द वंस who are you are in love with, or if you are in a relationship, they are coming with an offer for you. If you are married, then you will see a lot of new emotional beginning with your you'll see a lot of, there's a reconciliation that will be coming in for you. So congratulations on that. Someone from your past is returning. See, मेरे कार्ड्स में आई गेट गूज बम्प्स, इतना सिंक्रोनिसिटीज। तो ये वाला जो है सिक्स ऑफ कप्स भी मैंने आपको बोला, नॉस्टैल्जिया, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग एंड दिस इज कंफर्म्ड विद दिस लवर डेक का कार्ड ऑल्सो। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, देयर विल बी अ रिकॉन्सिलेशन, मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, बिकॉज आपका हाँ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज जहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें गॉड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है और काफ़ी सारे लेसन्स होते हैं सीखने के लिए। तो वो जो है उनके साथ अगर आप सेपरेशन में थे, वो वापस आ रहे हैं आपके लिए इमोशनल एक कप लेके विद न्यू इमोशंस एंड इट इज़ टाइम फॉर अ रिट्रीट। ओह माय गॉड, इट इज़ सो अमेजिंग। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड टेक अ रिट्रीट। देख रहे हैं दोनों कितने प्यार में, दे गोइंग टू सम प्लेस। ऐसा ही आपके साथ कुछ होने वाला है जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। मेरा प्रेडिक्शन जब सही आए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझको बताते हैं। आपके मन में काफ़ी फियर्स रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, विच इज़ नेचुरल। आप काफ़ी डर था आपको मन में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो विद द मून कार्ड आई सी इट, बट विद द मून कार्ड ऑल्सो यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन, यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर साइकिक एबिलिटीज़ एंड यू ऑल्सो वेरी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ इमोशनली चीज़ों को आप काफ़ी मतलब अच्छे स्पेस में हो। आपका रिलेशनशिप अपने मम्मी के साथ भी अच्छा आप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर स्ट्रॉन्ग मतलब आप अपने साइड से अपना कर्तव्य करते जाए, अपना कर्म किए जाए और माँ के साथ एक अच्छा जो रिश्ता है वो बना के रखें। इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर डिफरेंट पीपल, इट माइट नॉट बी फॉर सम पीपल, इट माइट बी फॉर सम पीपल, इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बिकॉज a lot of times when your mother relationships are not healed, you will might have मेंटल वूंड्स और टेंशन और स्ट्रेस और ऐसी चीज़ें हो सकते हैं आपके माइंड में, क्योंकि मून और माँ जो है वो मतलब आपका साइकिक स्पेस को डिसाइड करते हैं, राइट? यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग कमिंग अप। आपको बहुत क्लियरली थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाएगा, बड़े क्लियरली आप सोच पाएंगे डिस्टिंक्टिवली, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी बात रहता है थोड़ा पैसे, क्या आप चिंता करते हो? चिंता मतलब क्या, जैसे कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इधर इन्वेस्ट करना है, उधर इन्वेस्ट करना होता है, तो थोड़ा मेक श्योर करिए कि आप फोर ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख सकती हूँ। मेक श्योर करना कि यू ऑल्सो फोकस ऑन योर हार्ट, मतलब बस मनी और स्टेबिलिटी नहीं, हार्ट पे भी आप बहुत सारा फोकस करना। और आर्कएंजल माइकल के डेक, आर्कएंजल माइकल का मैसेज आपके लिए ये है कि योर करंट चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व वेरी वेरी सून एंड यू विल बी एबल टू लुक at the future with a smile. Such a beautiful message. Yes, you are correct. See, yes, you are correct. You're going to be like, ये देख रहे कितना खुश है, how she is happily jumping and happy. वैसा आपका एनर्जी होने वाला है. You listen to your inner guidance, made a wise choice and keep moving forward. This is a message for you. Open your heart. See, something to relate, something related to your emotions, something related to your psychic abilities, your mother. देखो हार्ट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो हार्ट का जो पावर है, राइट, दैट इज डिवाइन। सो बी कनेक्टेड विद योर हार्ट। इफ नो वन इज परफेक्ट, सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, कुछ भी सिचुएशन है, डोंट जज नीदर योर सेल्फ नॉर अदर्स, लेट लव हील द सिचुएशन। किसी को भी किसी के साथ भी लड़ाई है, झगड़ा है, उसको जस्ट लेट go and let love heal the situation. Recognize the signs from above. Okay, so angels are sending you messages now, like I am an angel on earth, I'm an earth angel, so I'm also sending you this message. And also you might be seeing feathers and you might be seeing a lot of angel numbers like 1111, 333, 444. Do I see any angel number here? देखते हैं angel
एंगल नंबर है कि नहीं, तो रिकग्नाइज करना उसको, इग्नोर मत कीजिए साइंस को। आपके यार फियर, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फियर है, यू आर ट्रैप्ड इन फियर। 2 बार आया है मेरे पास, देखो मैं एकदम कंफर्मेशन के साथ आपको बता सकती हूँ। तो ट्रैप्ड इन फियर, डोंट बी इन फियर, लेट गो ऑफ द सिचुएशन। भगवान पे आप उसको रिलीज़ कर दो, क्योंकि आप फियर क्यों करें। आप जहाँ पे अर्थ में आपको गॉड ने भेजा है कुछ प्लान करके अच्छा सा, तो जस्ट लेट इट बी इन अ पॉजिटिव स्पेस। योर माइंड सिंस अ वेटिंग, यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, यू बीन वेटिंग फॉर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में डिफीटेड, right? So see, the mind is a software, it's like any message can be typed in the mind. So don't type a message or don't store a message that is going to be creating thoughts of fear or of insecurity, of stress, of tension. ऐसे thoughts ही generate, सॉरी आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। ऐसे ही मैसेजेस आप शेयर करें, मतलब माइंड में रखें, जो आपको लिबरेट करता है, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दिलाता है। ऐसे सोच मत रखें जिससे कि आप टेंशन में आ जाते हो। ओके, एंड यू आर लाइक द लायनेस, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ लियोज हियर, और 13, see, 13 and Leo, I am born on 13, I am also a Leo. You have earned your stripes, right? तो लाइफ में आप जहाँ पे पहुँचे हो, आपने अर्न करा है, एक एक चीज़ आपके लाइफ में आपने अर्न करा है, राइट? सो देखो, आप देखो, री राइट द स्टोरी, मैसेज आ रहा है, री राइट द स्टोरी, विलन री राइट द स्टोरी। सो हो सकता है आपके साथ किसी ने गलत बिहेव किया हो, गलत ट्रीट किया हो, कुछ हुआ हो जिसमें कि आप काफ़ी डिफीटेड फील किया, आपने काफ़ी हर्ट हुए हो, कुछ हुआ हो सकता है, बट नो दैट आपका स्टोरी जो है वो आपके हाथ में है। और सो आई सी you have earned your stripes, where you have reached today, where you are today. This is a place where you have earned your stripes, you worked for it, you worked hard for it, and every single part of you is uniquely you, so celebrate that. And know that if there has been someone who's mistreated you, who have been continuously misunderstanding you, saying random stuff about you, then your narrative is completely on you. So what आपको क्या सोचना है अपने मन में, ये पूरा पूरा आपका खुद का विचार है। आप खुद उसमें कोई भी स्टोरी लिख सकते हो। तो राइट अ स्टोरी दैट इज गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील जॉयफुल, बिकॉज माइंड इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम स्टोरीज खुद लिख सकते हैं। री राइटर ओल्ड स्टोरीज, तो कुछ ऐसे स्टोरीज, आप सपोज आपने कुछ कहानी बनाया मन में कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे करके कुछ स्टोरी बनाए, और उस स्टोरी में से बाद में आप बहुत सैड फील करें, आप बहुत हर्ट फील करें। तो वो जो सफरिंग है, वो जो हर्ट है, वो जो स्ट्रेस है, वो सेल्फ क्रिएटेड होता है, बिकॉज इट्स मेड इन योर ओन माइंड। आप कोई भी नैरेटिव बना सकते हो और उसके हिसाब से आपको इमोशंस जनरेट होगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो कहानियाँ नहीं बनाता है, माइंड कहानियाँ बनाता है, और माइंड बस एक सॉफ्टवेयर है, और ब्रेन का काम है इमोशंस जनरेट करने का। तो माइंड में जो थॉट आएगा उससे ब्रेन में सॉफ्टवेयर जनरेट, उसमें ब्रेन में इमोशंस जनरेट होता है। तो कौन से इमोशंस आपको जनरेट करना है, आप उसके लिए इंचार्ज हो। तो आप खुशियों के इमोशंस को जनरेट करो, हैप्पीनेस के इमोशंस जनरेट करो। इसलिए कहानी वो अपने मन में बोलो जो कहानी आपको खुश करता है, और वही आपकी सच्चाई होगी। बिकॉज हमारे पास पावर रहता है को क्रिएट करने का, हम गॉड के ही पार्ट है, तो हमारे पास बहुत सारे पावर्स है जो गॉड से कनेक्टेड है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द लाइट, राइट। लेट्स सी, मैसेज फ्रॉम भगवत गीता। मैंने आपको आर्कएंजल माइकल का मैसेज दिया, भगवत गीता का मैं मैसेज देती हूँ। देखिए, मेरा रीडिंग जो है ये सबके लिए है, इट्स फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, जात, धर्म, किसी का ऐसा नहीं है, इट्स फॉर ऑल those who worship me, giving me all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, for them I am swift deliverer from the ocean to birth and death. Real renunciation means that you should always think yourself to be a part of the Supreme Lord. तो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू, ये आपका मैसेज था। आपके पास ऑलरेडी जो है सारा एक्सपीरियंस है, और यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ, जो भी हार्ड टाइम्स था वो ओवर है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली डोंट बी इन अ फियर जोन। और ये मैं वीडियो अभी एंड कर रही हूँ। ये मेरा प्रिंस आया है, प्लीज बाय बाय कर दो, बोलो बाय बाय गाइस। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और हम एक नया वीडियो लेके कल या परसों जल्दी से आएंगे। हम रेगुलरली यूट्यूब पे अपना कुछ लाइफ का डालते रहेंगे, जैसे हमारे लाइफ मिशन का पार्ट है।
तो आप भी अपने लाइफ में जो कुछ पॉजिटिव मैसेज है, जिससे किसी को एक अच्छा मैसेज मिले या आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन का पार्ट हो, उसको कीजिए और डरिए मत. एंड समबडी हु इज़ रिटर्निंग फ्रॉम द पास्ट, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड दिस वॉज वंडरफुल मेकिंग दिस फॉर यू, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस. बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय बोल दो बेटा, बाय बोल दो बेटा, बाय. या वेरी गुड, ही टॉक्स अ लॉट, he likes to talk so much. Bye 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 करो. वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश. कल अब सिम्बा और एलेक्स यहाँ पे नहीं है, वो दोनों नीचे बैठ के सोच रहे कि हमें भी वीडियो में आना है, बट वो कल आएंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है ना. इस वीडियो में प्रिंस आया और प्रिंस ने सबको बाय बाय कर दिया और कुछ. स्टे ट्यून्ड, और हर दूसरे दिन मैं एक वीडियो डालूँगी, और आई होप आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिला है. आपका वेटिंग गेम जो इतने टाइम से चल रहा था, वो मैंने एज आई सेड कि ऑलमोस्ट ओवर है. एंड डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट, बी द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी, एंड व्हेन देयर इज़ अ रिकॉन्सिलेशन दैट हैपन्स, तो ये कोई ट्रिप हो सकता है, तो उसको आप मतलब लिटरली बहुत एंजॉय करेंगे. एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा गुड हेल्थ एंड वर्ड ऑफ गुड लक एंटर्स इनटू योर लाइफ. थैंक यू, बाय.